Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with Lecture Monday with the next part of technical terms to be learned in plant breeding. Starting with the first one, that is protein ideal. That is a protein having such an amino acid composition that provides the required optimum amount of the essential amino acids when consumed in the recommended quantities. Basically, नाम से पता चल रहा है ideal protein मतलब कि बेटा इसमें सब कुछ है. Now, next one, mutant. Protein mutant. A mutant having a higher protein quality and not percent protein per grain or seed, plant or unit area and or a changed amino composition. मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है. नेक्स्ट वन इज प्रोटोगाइनी मतलब कि जिसमें फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए. मैच्योरेशन ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा बिकमिंग रिसेप्टिव ऑफ अ फ्लावर बिफोर डेशन ऑफ इट्स एंथर्स. नाउ pseudogamy. In epimetic species, embryo develop without fertilization, while endosperm development depends on the fertilization. Pseudogamy मतलब false gamy. नेक्स्ट इज प्योर लाइन सिलेक्शन. मीन्स कि हम लोग आइसोलेट करेंगे प्योर लाइन को फ्रॉम अ मिक्सचर. आइसोलेशन ऑफ प्योर लाइन्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ प्योर लाइन्स, इसको और भी बोला जाता है इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन. प्योर लाइन थ्योरी क्या है? All the plants in a pure line have the same genotype and the variation present among them is non-heritable. Means एक जीनोटाइप में जितने भी वेरिएशन होते हैं वो नॉन हेरिटेबल होते हैं. दैट इज द प्योर लाइन थ्योरी. नाउ प्योर लाइन क्या होता है? ये होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट होता है, प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट. नाउ प्योरिटी सीड के केस में द परसेंटेज ऑफ सीड बाय वेट बिलोंगिंग to the variety under certification. So that's it for today. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up till then. Take care. Bye bye.